हाय फ्रेंड्स आमे पॉलिटी सीरीज रो पार्ट 1 और पार्ट 2 सारी देजंती आज आमे स्टार्ट करबा पार्ट 3 ठीक अछि चलो स्टार्ट करबा आज रो टॉपिक होची फीचर्स यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज और सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ठीक अछि चलो एक नंबर क्वेश्चन फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज बोरोड फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज रो फीचर्स टा हमें काटू बोरो करथिले फंडामेंटल ड्यूटीज रो फीचर बोरो करथिले यूएसएसआर ठीक अछि ऑप्शन ए आउ 5 year planning is also borrowed from USSR fundamental duties आउ 5 year planning both borrowed from USSR next question feature of concurrent list is borrowed from concurrent list जो हम previous class रे पढ़थिले concurrent list यूनियन स्टेट आउ concurrent list पढ़थिले तो concurrent list रो फीचर्स टा काटू बोरो कराई छै हमर concurrent list ऑस्ट्रेलिया टू बोरोड कराई छै ऑप्शन बी language of the preamble provision regarding the trade and commerce joint sitting of the house of parliament concurrent list feature बोरो कराई छै ऑस्ट्रेलिया टू language of the preamble feature आउ provision regarding trade and commerce joint sitting of two house of the parliament ए सब फीचर्स ऑस्ट्रेलिया टू बोरो कराई छै नेक्स्ट क्वेश्चन feature of the concept of procedure by law is borrowed from concept of procedure by law is borrowed from Japan option C ठीक अछि law on which supreme court function also borrowed from Japan ठीक अछि concept of procedure by law और law on which supreme court functions is also borrowed from Japan next question feature of suspension of fundamental right during the emergency is borrowed from हमर जो फंडामेंटल राइट अछि तार सस्पेंशन करिवार फीचर्स टा जर्मनी टू बोरो कराई छी ऑप्शन ए ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन फीचर ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्य सभा इज बोरोड फ्रॉम इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्य सभा ठीक अछि बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑप्शन डी ठीक अछि प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 रे होची also borrowed from the South Africa. South Africa ରୁ कौन borrow कराई छी constitutional amendment features आउ election of the member of the राज्य सभा. Next question. Feature of scheme of federation with a strong center is borrowed from federation with a strong center. ए features टा borrow कराई छी कनाडा रो. जितकी भी सब federation रिलेटेड सब अछि सब फीचर्स कनाडा टू बोरो कराई छी एमती के देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड प्लेसिंग रेसिडुअरी पावर विथ द सेंटर पावर को सेंटर आउ स्टेट भितर डिस्ट्रीब्यूट करबा आ जहा पावर रेसिड्यू माने जहा पावर बंचिला रेस्ट पावर को सेंटर पाखरे रहबो आ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर advisory jurisdiction of the Supreme Court also borrowed from Canada. ठीक अछि Canada to federation with a strong center, distribution of power between the center and the state, and placing the residuary power with the center, appointment of the governor by the center, advisory jurisdiction of the Supreme Court borrowed from Canada. Okay, next question. Feature of concept of constitution is borrowed from the concept of constitution रो concept टा बोरो कराई छी यूके ऑप्शन सी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन फीचर ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज बोरोड फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट बोरोड फ्रॉम द यूएस ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज बोरोड फ्रॉम जॉइंट सेशन प्रीवियसली पढिथिले जॉइंट सेशन ऑस्ट्रेलिया जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन डी Feature of the ombudsman is borrowed from. Feature of the ombudsman is borrowed from the Sweden. Option D. Feature of president election is borrowed from the president करो election रो features टा borrow कराई छै हमर Ireland रो. Option D. Next question.
feature of the advisory jurisdiction of the Supreme Court is borrowed from the ଏବେ ପଢିଥିଲେ previous question ମାନଙ୍କରେ advisory jurisdiction of the Supreme Court is borrowed from the Canada. Option B. Feature of equality before law is borrowed from the equality before law. law ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏଇ feature borrow କରାଯାଇଛି ଆମର UK ଠୁ option A ଠିକ ଅଛି. Next question. Which article says that India that is Bharat shall be a union of state? କୋଉ article ଏଟା କହେ କି India that is Bharat shall be a union of state? ଏଟା ଆମର first article ଏଟା. Article number 1. ଠିକ ଅଛି. Option B. Federation is not from the result of any agreement. No state has the right to get separated from it. Okay, India रे जेते भी state अछंती से किछि agreement रु से स्टेट माने इंडिया सहित नाहंती आ कोनोसी स्टेट रो राइट नाही कि से इंडिया टू सेपरेट पारिबो ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म union on of union of states do not includes union of state এই टर्मटा हमर कोन इंक्लूड करेनी स्टेट्स कहछि तो स्टेट्स इंक्लूड करे आउ यूटीज इंक्लूड करेनी यूनियन टेरिटोरीज इंक्लूड करे नाही तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर. टेरिटोरी ऑफ इंडिया इंक्लूड बोथ स्टेट एंड यूटीज. ओके ध्यान देबा टिके. यूनियन ऑफ स्टेट्स माने ओनली स्टेट्स को बुझेला और टेरिटोरी ऑफ इंडिया रे बोथ स्टेट्स आउ यूटी दुईटा को बुझेला. Which princely state refused to join India at the time of independence? को princely state refused to join India at the time of independence? ठीक अछि देखियो. Hyderabad, Junagadh and Kashmir. All of these refused to join India. ठीक अछि. Next question. How Kashmir integrated with India? काश्मीर रिफ्यूज कला इंडिया सहित मिसवा पई तो केमती इंडिया सहित मिसाला काश्मीर को बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन ऑप्शन ए ठीक अछि. जुनागढ़ भी रिफ्यूज करथिला जुनागढ़ को केमती मिसाला बाय मींस ऑफ रेफरेंडम और हैदराबाद को बाय मींस ऑफ पुलिस एक्शन ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर डेस प्रिंसली स्टेट्स. इंडिपेंडेंस टाइम रे केतेडा प्रिंसली स्टेट थिले देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स. ऑप्शन सी 552 इनसाइड इंडिया एंड द 549 जॉइन इंडिया. 552 टा प्रिंसली स्टेट इनसाइड इंडिया थिले और 549 जॉइंड इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which article relates to the admission or establishment of new states that are not part of Union of India? को आर्टिकल रे एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया को आर्टिकल रे अछि सेटा आर्टिकल नंबर 2 रे ठीक अछि. ऑप्शन डी. आर्टिकल 3 gives parliament the power to form a new state and alter the area boundaries or name of an existing state. आर्टिकल 3 रे हमर जो एक्जिस्टिंग स्टेट अछि तारो एरिया बाउंड्री और नेम को चेंज करि पारिबे आ आर्टिकल 2 रे हमर न्यू स्टेट को न्यू टेरिटरी को इंक्लूड करि पारिबे ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच आर्टिकल states that creation of new states, alteration of boundary and changing name of existing states are not to be considered as amendments. को आर्टिकल कहेटा आर्टिकल नंबर 4 जो हमें न्यू स्टेट को ऐड करिवा किंबा एक्जिस्टिंग स्टेट रो बाउंड्री नेम ए सब चेंज करिवा एटा हमर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हिसाब रे काउंट हेबो नाही बोली आर्टिकल 4 कहे. ऑप्शन सी ठीक अछि. ऑप्शन सी. Indian territory can be ceded to foreign state only by the amendment of the constitution under article number 368. इंडिया रो कोनोसी भी टेरिटोरी को फॉरेन
कंट्रोल अंडर रे ओनली आर्टिकल 368 यूज करके दे पारिबा सेमती दे पारिबा नाही। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कमिटी रिजेक्टेड लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को कमिटी रिजेक्ट कला कि लैंग्वेज बेसिस रे स्टेट मानकर रीऑर्गेनाइजेशन हेबो नाही बोली को कला जेवीपी कमिटी रिजेक्ट कर देतिला ऑप्शन बी ठीक अछि formed in 1948 1948 रे फॉर्म होइतिला मेंबर्स वर जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल एंड द पट्टाभी सीतारमैया जे भी पी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन in October 1953 the government of India created this is the first linguistic state October 1953 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेट को फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेट माने फास्ट लैंग्वेज को नहीं कि को स्टेट टा फास्ट क्रिएट हेतिला को स्टेट क्रिएट हेतिला आंध्रा स्टेट क्रिएट हेतिला ऑप्शन डी बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग पीपल फ्रॉम मद्रास स्टेट आंध्रा क्रिएट हेतिला 1953 रे जोटा कि फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेट थिला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन who was not a part of three-member state reorganization commission which suggested language as the basis of reorganization of state जो मेंबर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन जो बनी थिला थ्री मेंबर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन जोटा कि लैंग्वेज बेसिस रे ऑर्गेनाइज करिया पई स्टेट मान को सेतिर किए मेंबर नथिले किए मेंबर नथिले मोर पट्टाभी सीतारमैया मेंबर नथिले ऑप्शन नंबर सी ठीक अछि suggested 16 states and 3 centrally administered territory कहि दोछि किछि हमर जो जेवीपी कमिटी बनिथिला जे भी आ पी 1948 रे से कमिटी रिजेक्ट कर देला कि लैंग्वेज बेसिस रे हमर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हेबा दरकार नै बोली पुनी 3 मेंबर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन गोटे बनला जोथरे कि मेंबर थिले के एम पानिकर फैजल अली आउ एच एन कुंजरू ओके तीन जन मेंबर थिले हेड थिले सेतिर फैजल अली से सजेस्ट से कमिशन सजेस्ट कला कि 16टा स्टेट आउ 3टा सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी हो बोली ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन by the State Reorganization Act 1956 and the 7th Constitutional Amendment Act 1956 dash state and dash UTs were created okay और जो State Reorganization Act हैला 1956 रे ଆଉ 7 Constitutional Amendment Act 1956 रे केतेटा स्टेट आउ केतेटा यूटीज क्रिएट हैला 14टा स्टेट आउ 6टा यूटीज क्रिएट हेतिला ऑप्शन नंबर 8 ठीक अछि ऑन नवंबर 1 1956 नवंबर 1 1956 रे 14टा स्टेट आउ 6टा यूनियन टेरिटरीज क्रिएट हेतिला फर्स्ट which was the first to have a new name in 1950 ओके काको फर्स्ट नुआ ना देइथिला उत्तर प्रदेश को ठीक अछि ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश को ना थिला यूनाइटेड प्रोविंस जार ना चेंज करा होला उत्तर प्रदेश केबे 1950 रे आ मद्रास रो ना चेंज की तमिलनाडु हे गला 1969 मैसूर रो ना चेंज की कर्नाटक हला 1973 उत्तरांचल रो उत्तराखंड एंड तो पोंडिचेरी रो पुदुचेरी हला 2006 ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन in dash the United Territories of Delhi was re-designated as the National Capital Territory of Delhi okay केबे यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ दिल्ली रीडेजिग्नेट कराए कि कराला नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1992 रे ऑप्शन डी बाय द 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 हिसाब रे करागला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन when Orissa was renamed as Odisha ओडिशा को चेंज करिकरी ओडिशा केबे करा हितला हमर 2011 रे ठीक अछि ऑप्शन डी एंड ओडिया got the classical language status
इन 2014 रे ओडिया को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिलथिला आ फास्ट मिलथिला हमर तमिल को 2004 रे। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन। The constitution deal with citizenship from article dash to dash। constitution रे जो citizenship देइछि पार्ट 2 रे हमर केते रो केते आर्टिकल रे डील करे। आर्टिकल नंबर 5 रो आर्टिकल नंबर 11 ऑप्शन सी अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया follows which of the following act for determining citizenship। सिटीजनशिप डिटरमाइनिंग पे इंडिया को एक्ट को फॉलो करे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 ऑप्शन डी। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन। which is not a valid ground on the basis of which you can acquire Indian citizenship। कोउटा गोटे valid ground नुहे जो बेसिस रे कि इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करि हब। कोटा valid ground नुहे by neutralization valid ground by registration valid ground by incorporation of territory valid ground by birth valid by descent valid। ओके तो कौन सी भी नुहे none of these। ऑप्शन ए इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड इन 5 मेन वे। एई जो पांचटा वे रहला ए पांचटा वे रे इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करि हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन बोर्न इन इंडिया on or after 26 January 1950। 26 January रे और 26 January 1950 ପରେ but before 1st July 1987 is a citizen of India by birth irrespective of the nationality of his parents। बुझे तो बुझी ओडिया रे। ए पर्सन बोर्न इन इंडिया जदि जे बोर्न हैला इंडिया भितर ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 रे किंबा ता परे बट बिफोर 1st जुलाई 1987। ओके बट 1st जुलाई 1987 आगरु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया से इंडिया रो सिटीजन गोटे हबो बाय बर्थ। ठीक अछि। इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट तार पेरेंट्स माने इंडियन सिटीजन थांतु कि न थांतु बट से जदि ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बिफोर 1st जुलाई 1987 एतकी भितरे बॉर्न हेची तो से इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स से गोटे इंडियन सिटीजन हबो। ऑप्शन ए ठीक अछि। A person born in India on or after 1st July 1987 is considered as a citizen of India only if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth। Next 32। A person born outside India on or after 26 January 1950 but before the 10th December 1992 is a citizen of India by descent if the father was a citizen of India at the time of his birth। देखंतु a person born outside India on or after 26 January 1950 but before 10 December 1992 कौनसी पर्सन born हैला outside of India रे on or after 26 January 1950 but before 10 December 1992 is a citizen of India by descent if तार father was a citizen of India at the time of his birth। ठीक अछि। ऑप्शन ए हेगला ठीक आंसर। The children of a foreign diplomat posted in India and enemy alliance cannot acquire citizenship by birth। by birth रे foreign diplomat जो माने कि इंडिया रे अछंती आउ एनी enemy alliance जदि तांकर के बर्थ कला इंडिया भीतर तो से बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप नहीं पारिबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम 3rd December 2004 a person born outside India shall not be citizen of India by descent unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year of the date of birth। फ्रॉम 3rd December 2004 जदि कोनोसी पर्सन बोर्न हैला आउटसाइड ऑफ इंडिया
तो ताको गोटे वर्ष भितर कौन सी इंडियन कन्सुलेट रे रजिस्टर करले पड़िबो नहले से इंडिया सिटीजनशिप पाई परिबो नाही। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी ठीक अछि। To acquire Indian citizenship by naturalization, minimum residing period should not be less than dash year. Minimum residing period should not be less than 11 year. जदि आपण इंडियन सिटीजनशिप नेबा को चाहूचंती जदि कोनोसी फॉरेनर तो ताको मिनिमम रिसाइडिंग पीरियड 11 वर्ष ताको दरकार जो थ्रू कि से 12 मास कंटिन्यू स्टे करथिबो अप्लाई करबा बिफोर माने गोटे वर्ष कंटिन्यू स्टे करथिबो अप्लाई करबा बिफोर। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन लूज योर इंडियन सिटीजनशिप बाय तमे इंडियन सिटीजनशिप केमती लूज करबा बाय डेप्रिविएशन बाय रेन्यूंसिएशन बाय टर्मिनेशन ऑल ऑफ दिस ए तीनटा वे जने इंडियन सिटीजनशिप लूज करि परिबो ऑप्शन ठीक अछि। Voluntary act where an Indian citizen give up their citizenship after acquiring another country citizenship is called ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିର ସିଟିଜେନସିପ୍ ନିଏ ଆଉ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ସେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରେନୁନ୍ସିଏସନ୍ ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ସେ ହରେଇଲା। ଅପସନ୍ ଏ automatic cessation of Indian citizenship when acquiring another country citizenship ଯଦି ତମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିର ସିଟିଜେନସିପ୍ ନେଇ ଯାଉଛ ଆଉ ନ ଜଣେଇକି ତ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ତମର କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସେଟାକୁ ଟର୍ମିନେସନ ବାଇ ଟର୍ମିନେସନ ୟୁ ଲୁଜ योर सिटीजनशिप। ऑप्शन बी compulsory revocation of Indian citizenship acquired by fraud falsehood or disloyalty ଯଦି ତମେ ଠକିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ନେଇଯାଇଛ ତ ବାय deprivation ଏଟା ତମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ କ୍ୟାନସଲ କରାଯିବ। नेक्स्ट क्वेश्चन days that are excluded from eligibility for overseas citizen of India OCI status overseas citizen of India status रू को मान को एक्सक्लूड कराइछि भूटान नेपाल बांग्लादेश ऑल ऑफ दिस को मान को बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक्सक्लूड करा जाइछि OCI status रू। ऑप्शन डी ठीक अछि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर बोथ आर एक्सक्लूडेड। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन overseas citizen of India OCI card holders are entitled to जो मान को पाखरे OCI card holder अछि they are entitled to multiple entries करि पारिबे live and work in India work in the private sector in India lifelong visa ताको पाखरे अछि आ तो हे गला ऑप्शन ए ऑल ऑफ दिस। ठीक अछि except from acquiring agriculture and plantation property एई जिंस को छाड़ी कि बाकी सब कुछ से माने करि पारिबे जा पाखरे OCI कार्ड अछि। तो overseas citizen of India card holder are not entitled to overseas citizen of India OCI card holder को कौन एंटाइटल करा हिनी ओके मल्टीपल एंट्री तो करा हिची लाइफ लॉन्ग वीजा भी करा हिची एम्प्लॉयमेंट विथ द गवर्नमेंट इन इंडिया ए जिंसटा करा ही नाही। ठीक अछि ऑप्शन डी हे गला हमर ठीक आंसर ऑप्शन डी। also to hold the constitutional post and vote in election जो मान को पाखरे OCI कार्ड अछि से माने गवर्नमेंट रो एम्प्लॉयमेंट नै परिबे नाही किंबा कोनोसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट किंबा इलेक्शन रे वोट करि पारिबे नाही। ठीक अछि सरे गला 40 टा क्वेश्चन टेस्ट टाइम when Odisha was renamed as Odisha ओडिसा रो ना केबे चेंज हे कि ओडिसा हला कमेंट करिवे ऑप्शन दे आइछि when which princely state refused to join India at the time of independence को princely state इंडिया को जॉइन करबा को मना कला इंडिपेंडेंस पर। ओके कमेंट करिवे दुईटा क्वेश्चन रो आंसर कमेंट सेक्शन यदि वीडियो को भल लागला गोटे लाइक टे करंतु और आपण मान को रिव्यू कमेंट करके जणांतु और जो दुईटा क्वेश्चन देइछि सेटा को कमेंट करके तार आंसर जणांतु जदि रिलेवेंट लागुछि तो आपण को फ्रेंड मान को सहित शेयर करंतु आउ अपकमिंग पार्ट पाई सब्सक्राइब करंतु चैनल को। ठीक अछि थैंक यू।